हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करूंगी। इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास and the number of students, and the students are arranged in some manners, it means in some rows. So in this question we have the conditions with the number of rows and the number of students in the rows. Okay, so we have to find the number of students, but we will let the number of students in a row and the total number of rows. So first of all we will let the number of rows. Solution: let the number of rows be x and the number of students in each row be y. So the number of rows be x and the number of students in each row be y. So the total number of students, how many students are there in the class? So the total number of students in the class कितने हो जाएंगे? x into y. कैसे होंगे देखिएगा आप. Let us suppose we have 5 rows, okay, and the number of student in each row be 3. So इस तरह से अरेंज होंगे ये students हमारे. So the total number of students, how we can find? 3 into 5 से कर सकते हैं ना 15. Similarly we have done over here the total number of students is x into y, number of rows and the number of students in each row. Okay, now we'll read the question. In the question they are given that 3 students, if we take 3 students extra in a row, then the number of rows would be 1 less. भाई अगर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज कर दिया रोज में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी सेम ही है ना, तो नंबर ऑफ रोज में अगर रोज में आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिया, यानी कि जैसे पहले 3 थे, अब लेट अस सपोज मैं इनको कैसे कर देती हूँ, 5 कर देती हूँ या फिर और ज़्यादा कर देती हूँ, कम ज़्यादा कुछ करती हूँ, तो नंबर ऑफ रोज भी रिड्यूस हो जाएंगी ना, है ना. तो इसी वजह से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाते हैं. They are saying the number of students are 3 extra in a row. तो number of students in a row is y था ना, तो y को 3 ऐड कर दिया क्योंकि 3 extra students हैं, but the number of rows be 1 reduced. So the number of rows एक कम कर दिया, तो total number of students सेम ही है, x into y. Now we'll solve this equation and we get x into y plus 3x minus y minus 3 is equal to xy. अभी xy से कट हो जाएगा and we get 3x minus y minus 3 is equal to 0. That is our equation 1. देखिएगा कितनी सिंपली हमने equation 1 फॉर्म कर लिया. सेम वे से हम equation 2 भी फॉर्म करेंगे. Now in equation 2 they are saying that if we take 3 students less in a row. अब देखिएगा जैसे इसी वाली सिचुएशन में मैंने 2 स्टूडेंट एक रो में ले लिए, ठीक है ना, तो लेट अस सपोज हमारे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी ना, देखो 15 स्टूडेंट्स को अरेंज करने के लिए करनी पड़ेगी ना. द सेम वे इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज 3 लेस, सो सेकेंड कंडीशन के लिए y कितना हो गया, 3 लेस हो गया, तो नंबर ऑफ रोज वुड बी 2 मोर, नंबर ऑफ रोज 2 इंक्रीज हो जाती हैं, तो x प्लस 2 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेम, अभी भी सेम ही है, उन्हीं स्टूडेंट्स को बार बार अरेंज कर रहे हैं डिफरेंट वे से हम. तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे तो xy माइनस 3x प्लस 2y minus 6 is equal to xy and xy will reduced by xy and we get minus 3x plus 2y minus 6 is equal to 0, and if we take minus as a else common then we get 2x minus plus 6 is equal to 0. 2x minus 3x minus 2y plus 6 is equal to 0. And now this is our equation 2, and you can see over here that we have two equations. 3x minus y minus 3 is equal to 0 and 2x minus 2y plus 6 is equal to 0, and we can solve this equation by any method. But I already told you in previous classes or previous videos that if the coefficients are equal of either variable like x या y, किसी के भी एक के अगर variables में अगर coefficients equal हैं तो हम कौन सा method use करते हैं? We always use elimination method. That is the best way.
Okay, so we can see that in these two equations the coefficient of x are already equal, 3 and 3. So we will write this equation with each other. So that is our equation 2 and we will write equation 1. The equation 1 is 3x minus y minus 3 is equal to 0. And what we have to do? We have to subtract these equations. Why? Because the sign of the coefficients are same. I already told you in the previous videos that if the signs of the coefficients are same ना तो हम subtract करते हैं, and if the signs are different then we will do addition. Okay, so subtract. If we subtract this equation, a sign will change. Okay, so this will reduced by this and we get minus y plus 9 is equal to 0, and the value of y will become y is equal to, y की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगी y की वैल्यू. Okay, so the value of y is 9. It means the number of student in each row be 9. Now we'll put this value, put in any equation, like put in equation 1 में put कर देते हैं. And if we put this in equation, what is our equation 1? 3x minus y minus 3 is equal to 0, and 3x minus 9 minus 3 is equal to 0. 3x minus 12 is equal to 0. 3x is equal to 12 and x is equal to 4. So the total number of rows be 4 and the total number of students in each row be 9. So the answer statement, the total number of students, the total number of students is equal to x into y, which is equal to 4 into 9. It means 36. So we have total number of students are 36. Friends, hopefully question आपको समझ में आ गया होगा. बहुत easy सा question है. I re-explain it. In this question we have to find the total number of students, and the students are arranged in some manners, means in some rows, and we have the different situations. If we reduce or increase the number of rows, the number of students in a row and the number of rows will also increase and decrease accordingly. Okay, so we have, if the 3 students increase कर दे तो number of row 1 कम हो जाएगा. ठीक है, अगर ये 1 3 कम कर दे तो 2 इंक्रीज हो जाएगा. सॉल्व किया, इक्वेशंस फॉर्म कर दी, इक्वेशंस के हमारे कोएफिशिएंट्स इक्वल है, एलिमिनेशन लगाया और वैल्यू फाइंड कर दी, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कर लिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है. इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या करना है? प्रॉब्लम सम्स पे फोकस करना है, क्योंकि सॉल्यूशंस तो, सिंप्लीफिकेशन तो फिर भी आप सीख जाओगे धीरे धीरे, बट मेन जो है प्रॉब्लम सम्स, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना है. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप मेरे साथ क्लास 10 का फुल सिलेबस करना चाहते हैं फास्ट एंड वेरी इजी मेथड्स के साथ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.